Hey, hi, hello, welcome back, everyone. Um, I'm back after almost a week, I guess. I don't really know, I don't remember. Eh, That's mostly because, alright, so there's this thing about me. Whenever I have too much going on, or like there is a mess, and like I don't know what to do with my life anymore, I isolate myself. I push everyone away, isolate myself, cut all my contacts with everyone, and just be with myself. So, yeah, it's a very, very, very bad coping mechanism because you don't have anyone to talk to, you're not venting out to anyone, you're not, yeah, you're just alone. And when you're stressed, being alone maybe to me does not sound like the best option. Even though my coping mechanism is isolation, but I'm saying this thing because I have something called self realization, but I can't really help it either because I don't know why it just happens on its own. Whatever. And this is my third cup of this is my third cup of coffee of the day. But that's because like I thought, yeah, let's make myself coffee so that I can be productive. And then I finish my coffee, but I somehow don't start studying. So, yeah, this is my last cup of coffee of the day. I'm not gonna take any more. अब अगर पढ़ना चालू नहीं हुआ तो I just give up for today. मैं रोज़ गिव अप ही कर देती हूँ. That's the thing about it. So I have electrochemistry का homework and I haven't started yet. ये कॉफ़ी यहाँ तक था और मैंने यहाँ तक पी लिया है. तो before it finishes, I have to start doing this. And don't mind the headline because I don't know how to do calligraphy. I just wanted to write a bold headline. Okay, whatever. Also, guys, in my opinion, the original vanilla flavor of the Oreos are the best. Like, I love the white wale Oreos. Like, okay, the strawberry ones are still not that bad, but I don't know why the chocolate Oreos they suck. I just cannot eat. Like, I do like chocolate flavor, but chocolate Oreos they absolutely suck. Anyway, what am I even yapping about? मतलब एक हफ्ते बाद आई और मैं ओरियोस के बारे में बता रही. That's just so random. It's because I'm random. Anyway, yeah, so as I told you guys, I had a test on last Saturday, and like Saturday and Sunday we had mains level wala on Saturday and advance on Sunday, but I didn't give advance wala. मेंस वाला भी नहीं देना चाहिए था बिकॉज जो मार्क्स आया इट्स लाइक नहीं देना चाहिए था. मतलब क्या ही मार्क्स आया. वन ऑफ द लोएस्ट रैंक्स आई हैव गॉटन. Kind of sucks. I don't even know what I'm doing with my life anymore because this time I had actually studied what. Okay, so what I had decided कि जो ongoing chapters हैं मैं वो पढ़ूँगी ताकि उनमें से like इसके पहले वाले टेस्ट में क्या हुआ था जो ongoing chapters थे उनमें से maximum नहीं फिर भी like a good amount of questions came from those chapters, so that was my plan all along that I'll study the ongoing chapters. And अगर physics chemistry maths तीनों को मिला के I had studied around तीनों में सात या पाँच चैप्टर्स, सो दैट्स लाइक 15 चैप्टर्स. एंड उनमें से भी अगर हर एक इसमें से अच्छा आज और मुझे 15 क्वेश्चंस भी करेक्ट हो जाए तो लाइक दैट वुड बी अ गुड हेड स्टार्ट फॉर मी लाइक. बट नहीं हुआ बिकॉज उतना क्वेश्चंस आए नहीं. मुश्किल से क्वेश्चंस आए. बहुत ही लाइक कम क्वेश्चंस थे करंट चैप्टर्स से. एंड एंड मोमेंट पे ओ एम आर शीट सब लोग फिल कर रहे थे. आई वाज लाइक ओ शिट एवरीवनस फिलिंग सो मच एंड मैंने इतना सही किया है. तो या मुझे मेरी फट गई वहाँ पे और मैं रैंडम बबल्स फिल करने लगे और मेरे नेगेटिव मार्क्स में चले गए. कट गए सब. लाइक क्यों करती हूँ मैं. आई डोंट नो.
मुझे हर एक एग्ज़ाम अब तक 3-4 हो गया, ये 4th टेस्ट था, मेजर टेस्ट, एंड अभी भी आई एम फेसिंग पैनिक अटैक्स एंड ऑल दोज इन मिडल ऑफ द एग्ज़ाम। जो उल्टी आने लगती है, मेरा सर चकराने लगता है, मेरे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। Like, what the heck is wrong with me? Like, I don't see anyone else around me facing this. It's just me. I don't know. I mean, yeah, that would be very selfish of me to say it's just me facing all that. Yeah. Like, no, I know there are people, maybe they're good at coping with it, and I'm not. Like, I don't know. मैं इसके पहले वाले मेजर टेस्ट में मेरी इतनी गंदी वाली फटी थी कि मैं तो सो ही गई। मतलब मैं सो गई, 2 घंटा सो गई मैं एग्ज़ाम में। लाइक I don't know what I'm doing with this JEE anymore. मेरी सो ही नहीं रहा है भाई, जितना भी पढ़ो कुछ नहीं हो रहा। Alright, I'll show you guys something. So these are my goals for this month. Why am I showing? Because yeah, for developing a sense of, what do you call that? अरे इंग्लिश भूल गई मैं भाई। a sense of क्या होता है, वेट, या a sense of commitment, like कुछ कमिट, या ये इट्स अ कमिटमेंट। यस, इतना टाइम लगा मुझे कमिटमेंट सोचने के लिए। मतलब इंग्लिश की हालत तो भाई धज्जियाँ उड़ चुकी है मेरी। इंग्लिश हिंदी कुछ भी नहीं आता मुझे अब, व्हाटएवर। और ये लॉक इन मैंने चिपका रखा था, बट मेरा लॉक इन का जो है, मेरा लॉक हर बार टूट जाता है, तो मेरा लॉक इन होता नहीं है। मुझे जब रिकॉर्ड करना होता है तब इन लोगों को ऑन बजाना होता है। एनीवे, मेरा लॉक इन हो ही नहीं रहा है। आई एम गोना टेयर दिस एंड थ्रो दिस अवे एंड आई एम गोना राइट अगैन, बिकॉज व्हाई नॉट। Anyway, so guys, just pray for me that I survive for 8 more months, I guess. I guess 8 महीने और कितने महीने बाकी है, और अगर 8 या 9 महीने बाकी होंगे। हाँ, 9 महीने बाकी है शायद। I don't even know कितने महीने बाकी है भाई। I don't know anything. I don't know what I'm doing. Anyway, just pray for me. Pray that I survive. Pray that I somehow do something and कुछ हो जाए, कुछ miracle हो जाए। I don't know. I'm waiting for a miracle to happen. Okay, so no more self isolation. मैं हर बार बोलती हूँ लेकिन फिर भी हो जाता है कैसे तो करके, पता नहीं। Yeah, I'm gonna promise myself. Yeah, whatever guys, just pray for me that I somehow make it through this month and मैं ये चैप्टर का होमवर्क करना शुरू करूँ, क्योंकि मेरा कल ही क्लास है और हमें होमवर्क सबमिट करना होता है। एंड वो बुढ़ा, आई हेट माई फिजिकल केमिस्ट्री का सर, आई लिटरली हेट हिम. In case he sees this video, I'm dead. I don't know. He might. I don't know. नहीं देखेंगे शायद, mostly because he's a millennial. He's a boomer. Yeah, he's a boomer. He's a boomer. He probably won't see this, right? He's probably scrolling Facebook. Okay. Okay, sir, if you're watching this video, I don't really hate you. It's just the way you teach, I don't like it, and I don't like to look at your face because your mouth stinks of all those gutka, beedi and cigarette. So please wash your mouth before you come to class. Thank you. Anyway, bye.